सो अध्याय 6 ध्यान योग। अच्छा, इसमें एक गलती जो मैं कर रही थी विच आई जस्ट वुड लव टू हाईलाइट, इट इज नॉट ध्यान धारणा समाधि, इट इज धारणा ध्यान समाधि। तो ध्यान जो है वो अष्टांग योग का 7वां भाग है, इट इज नॉट द 6th, तो आई वाज इनकरेक्टली सेइंग इट टू बी 6th, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। ओके, so we did 2 and 3, right? And we have to start from 4th. Anything from the past, पहले जो किया है हमने उसमें से कुछ भी? Okay, then let's move to the 4th one. चौथे सूत्र में कृष्ण कहते हैं यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्चते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्थ तोच्यते. So yada is whenever, when, he न इंद्रियार्थेषु न कर्म कर्म स्वनुष्चते is कर्मसु अनुष्चते. So there are two things that Krishna is pointing towards. दो बातें हैं जिसकी तरफ कृष्ण इशारा कर रहे हैं. कहते हैं कि ना तो इंद्रियों के कारण और ना ही कर्मों के कारण. तो क्या है उसके कारण? अनुष्चते is attached. सर्व संकल्प सन्यासी, so such a सन्यासी जिसने सारा पूर्ण संकल्प लिया हो, renouncer of everything, योगारूढ़स्थ उच्यते. So such a sannyasi only is yogarudha. Sorry. So when there is no attachment to the sense object as well as actions, and having renounced all sankalpa, then is one said to have attained concentration. So गीता प्रेस में कहते हैं जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्प का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है. हमने पिछली बार देखा था कि कृष्ण जो है वो बताते हैं कि संकल्प का त्याग क्यों आवश्यक है. दूसरे सूत्र में ही देखा था. संकल्प हम तभी करते हैं जब कुछ पाना होता है, कोई ध्येय होता है, एक खास लक्ष्य होता है, गोल होता है, तो उसके लिए संकल्प की आवश्यकता होती है. हम जब कहते हैं लोगों को कि तुम्हारा विल पावर बड़ा लूज है, तो वी वांट टू टेल देम कि भाई तुम किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ ही नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारा बीच में संकल्प टाइम फिस हो जाता है. और कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि हर प्रकार के संकल्प को त्याग देना है. और क्या क्या त्यागना है. इसके साथ ही इंद्रियां जो कुछ भी हमें लेकर के आती हैं, तो इंद्रियों के सारे विषय वो सब त्यागना है और कर्मों को त्यागना है. जो ये तीनों बातों को त्याग देता है उसे ही सन्यासी कह रहे हैं. और कृष्ण कहते हैं कि उसे ही योग में आरूढ़ जानो, यानी योग में स्थित जानो. तो क्या है कहानी? कर्म योग में भी हमने ये देखा था कि जो कुछ भी हम करते हैं वो तो सब कुछ हमेशा ही इंद्रियगत ही होती है. इंद्रियों के अलावा हमारे जीवन में कुछ है ऐसा हमको मालूम ही नहीं है. और इसका एक बहुत मजेदार उदाहरण है. जब भी हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो किसी भी इंद्रिय से लाचार हो,
उसकी कोई इंद्रिय कार्य नहीं करती, तो उनके प्रति हमारा जो पूरा रवैया है, हमारी जो भावना है, उसके प्रति ध्यान दीजिए। देखिए कैसा होता है। यदि कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है, यदि कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है, किसी का स्वाद चला जाता है, नमनेस आ जाती है, हाउ डू वी, कोई कर्मेंद्रियों से लाचार होता है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो हमें लगता है कि उसके पास तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। अरे इतना बड़ा, सच ए बिग पार्ट ऑफ लाइफ मिसिंग, जीवन का इतना बड़ा हिस्सा तो उससे बिल्कुल ये व्यक्ति अनभिज्ञ है, उसके पास है ही नहीं। सो वी देन कॉल देम डिसेबल, विच मीन्स अगर सारी इंद्रियां ही गड़बड़ा जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? फिर तो हमारे पूरे जो हमारी डिक्शनरी है उसमें इंद्रियों के आगे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम कुछ है ही नहीं। और इसीलिए अष्टावक्र हंस पड़े थे उन लोगों पर जिन्होंने उनको देख करके जनक की सभा में उनका उपहास किया था कि जनक तुम इन्हें पंडित कहते हो। तो इस प्रकार का हमारा इंद्रियों के साथ जो है वो नाता होता है, ऐसा रिश्ता होता है इतना प्रगाढ़ कि यदि इंद्रिय खत्म हो जाए तो हमें पता ही नहीं है कि हम क्या है। और यहाँ कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियों के विषय को त्यागो, यानी भूल ही जाओ कि इंद्रियां क्या हैं, उनका कोई कार्य है। और प्रत्याहारा तो यही कहता है कि सभी इंद्रियों को भीतर की ओर समेट लो, बाहर जाने ही मत दो। तो उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो इंद्रियों का उचित रूप से कार्य ना करना ये तो वरदान हो गया। पर वो वरदान तब हो जब किसी की दृष्टि वैसी हो, जब हम उसके ऊपर रोने लगते हैं, हम ऐसे व्यक्ति को बड़ा असहाय सा महसूस करते हैं। जबकि मजेदार बात ये है ना, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दिस, once upon a time, couple of years back, इंक्लूसिव एजुकेशन का एक ट्रेनिंग था 3 दिन का, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट एज अ पार्टिसिपेंट, एंड द ट्रेनर हिमसेल्फ वाज vision impaired, could not see, and we also met a person who was hearing impaired. एंड आई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड आई सेड कि जनरली हमारी सोसाइटी का एक बहुत, ठीक है, आई अग्री कि दे नीड टू बी टॉट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। इंटरनली तो सब एक ही है ना, भीतर तो सबके वही ज्ञान है, सबके भीतर वही धारा है। और मैं बात कर रही थी ट्रेनर से, सो आई वाज आस्किंग कि मुझे ये बताइए कि यदि आप की दृष्टि जाती रहती है, आप देख नहीं सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि आप जो सुन सकते हैं हम वैसा नहीं सुन पाते? बिकॉज इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक्सरसाइजेस व्हेन ही वाज मेकिंग अस डू द एक्टिविटीज, कोई एक जरा सा भी हिलता था ना, ही वुड नो कौन हिला, एंड ही कुड टेक द नेम ऑफ द पर्सन एंड से सो यू हैव टेकन वन स्टेप। तो जो शक्ति आंखों के पास थी, जो प्राणवायु आंखों को ये प्रदान कर रही थी शक्ति चलने की, अब वो प्राणवायु दूसरे इंद्रियों की तरफ चली गई है। और इसीलिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है कि आप प्राणवायु को जो है नियमित कर सके ताकि वो हर जगह भटकाए ना आपको। एंड ही सेड यस, मैं जितने टच को जानता हूं यू विल नॉट नो, मैं जितनी साउंड्स को जानता हूं यू विल नॉट नो। इफ आई कांट सी, दैट इज कॉम्पनसेटेड by my listening, by the number of sounds, the minute variation that I can detect, but you can't. And similarly, the I we who can see well probably have 100 varieties of touch. They will have lakhs of varieties of touch.
लेकिन हमारा इंद्रियों के प्रति जिस प्रकार का रुझान होता है, हमारा जिस प्रकार का एसोसिएशन होता है, हम जैसे उनको देखते हैं, वी थिंक इफ दैट डजंट वर्क द लाइफ इज फिनिश्ड। और यहाँ पर तो कृष्ण बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों को त्यागना होगा। जब विषय ही त्याग दिए तो इंद्रियों का क्या कार्य? हमें यदि कह दिया जाए कि विषय को त्याग दो, तो हम कहेंगे यार टीवी देखने मना कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे? मोबाइल देखने मना कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे? कहीं जाने मना कर रहे हो, कुछ स्वादिष्ट खाने मना कर रहे हो, तो इस जीवा जीवा का क्या? डोंट वी लिसन हाउ पीपल से दैट आई लिव फॉर ईटिंग, खाने के लिए जीता हूं। तो उन बेचारों के साथ तो कृष्ण ने बहुत ज्यादती कर दी। कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों को त्यागना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं कि कर्मों का भी त्याग करना पड़ेगा। तो जो ना तो इंद्रियों के विषयों के साथ संयुक्त है, आसक्त है, और ना ही कर्मों के साथ। तो कर्मों का क्या अर्थ है? ध्यान देने योग्य बात है कि हम कुछ करते ही तब हैं जब हमको कुछ इंद्रियगत मोटिवेशन होता है। यदि कुछ खाने की इच्छा नहीं है तो हम पकाते नहीं हैं, या हम कहीं जाते नहीं है खाने को। यदि कुछ पाने की इच्छा नहीं है और रुपये पैसे भी आते हैं हमारे पास जिसके लिए हम पूरा हिसाब किताब लगाते हैं, what do we do with that? We do everything that can give us pleasure of senses, sense gratification, titillation. चाहे वो वेकेशन पे जाना हो, चाहे वो घूमने जाना हो, चाहे दोस्तों यारों के साथ बैठ के लगानी हो, चाहे शॉपिंग करना हो, चाहे टीवी देखना हो, whatever. The final job is sense pleasure. So every action, everything that we do is for sense pleasure. So if that be the case, how is it possible that yoga can happen in our life? And that is why Krishna then says that your action has to be not motivated by any end result, any goal. The moment it is motivated by a goal, then you are actually pleasing your senses. यदि किसी प्रकार का लक्ष्य है तो इंद्रियों के सुख के लिए हम मर रहे हैं। और इसीलिए वो कार्य जो वाकई आवश्यक हैं अस्तित्वगत रूप से, उनमें आपको एक बहुत ही सूक्ष्म आनंद आएगा करने में। वो कार्य ही इतने उत्कृष्ट कोटि के होते हैं कि उसे करने में बड़ा आनंद आता है। आप देखिए ना, आप वातावरण के लिए कुछ कीजिए, आप एनिमल प्रोटेक्शन के लिए कुछ कीजिए, आप वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए कुछ कीजिए, आप रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ कीजिए कि जो जिस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं, वी नीड सम स्ट्रॉन्ग। योर work itself becomes such meaningful thing and it gives you so much of happiness and joy, क्योंकि कार्य की जो कोटि है ना, द उसकी जो श्रेणी है, द क्वालिटी ऑफ दैट वर्क, that itself becomes a driving force, not because some end result to be achieved. हम चार लोग मिल करके अगर वातावरण में लगी जाएंगे तो कौन सा हम पूरा वातावरण स्वच्छ कर पाएंगे? दूषित करने वाले तो इतने भरे पड़े हैं। Against them 4 people would hardly suffice any need. Yet the importance of the work is so high that it gives tremendous happiness. One, you know, you are aligned to what existence is. And two, the sense of contribution.
आपने यदि वातावरण स्वच्छ भी कर लिया तो वो आपके लिए सिर्फ थोड़ी है. It's actually to be used by so many people you don't know and so many generations to come. So when this is why work becomes worship. जब किसी ध्येय के लिए नहीं किया जाता है, कर्म ही प्रधान हो जाता है. किसी खास लक्ष्य के लिए, गोल के लिए नहीं करना है. And then whatever comes as the reward of it or the जो भी कहे उसके बदले में, wonderful. तो तब निष्काम कर्म फलित होने लगता है. अब कृष्ण उसी को दूसरे तरीके से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इंद्रियों से वशीभूत होकर और कर्म से वशीभूत होकर के कुछ नहीं करता है, तो ऐसा सन्यासी जिसने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया हो. अब संकल्प ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो संकल्प किस बात का. प्रभु को पाने का भी लक्ष्य नहीं है. There is not even this as a goal that I want to merge in the ultimate. No goal. Drop that goal also. तो सारे संकल्प तिरोहित हो गए. जब ये होता है तो व्यक्ति स्वयं ही योगारूढ़ हो जाता है, योग में स्थित हो जाता है. So in certain way, you can also take these as the standards to know, parameters, मापदंड. How would you know कि योगारूढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए, किस बात पर मुझे ध्यान देना है, ये है साधना. मुझे क्या करना है ताकि मैं योगस्थ हो सकूं. तो मेरा ध्यान ये हो कि इंद्रियों के विषय मुझे पागल ना बनाए और लक्ष्य मुझे पागल ना बनाए. लेकिन आप जिनसे मिलेंगे आपको लक्ष्यों के अलावा कोई बात करेगा ही नहीं. What are you doing these days? Hey, I am giving up the desire and goals. Talk to them. And the whole world is like, that person doesn't have any goal. तुम वो कुछ कर नहीं रहे हो यार. That's why your speed is so slow, you know. Yes, that's why my speed is so slow. But I'm fine with it. So what? So this is what he is saying about how would you know that you have attained concentration. Anything here? आगे बढ़े. Yes, ma'am. चलिए 5वें की तरफ चलते हैं. उद्धरेत आत्मना आत्मनम न नात्मनात्मवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः. उद्धरेत, सो उद्धार कीजिए, उठाइए, अपलिफ्ट. what will uplift what? उद्धरेत आत्मना आत्मनम, आत्मन ही आत्मन का उद्धार करेगा. So what is the tool for, and here you will have to read this Atman in two ways. One is about the mind and one is about the Atman. So self with big S and self with small s. So a man needs to uplift himself by his own self. So what is the tool for any one of us here? It is the
self with small s, which is nothing but the mind. Na atmanam vasadayet. So na atmanam avasadayet. So the self should not, avasad is dragging down. Avasad हम कहते हैं कष्ट को, पीड़ा को. So it should not rather give you that pain. It should not create pain for you. And why so? Why Krishna is saying so? Atma ev hyatmano, Atma ev he atmano. Hyatmano is he atmano. Because Atman only is Atman's, Bandhuratman Ripuratmanaha. So Atman only can be its own Bandhu, the friend, or Ripu, the foe. So man should uplift himself by his own self. So let him not weaken this self. Okay, so do not weaken this self. For this self is a friend of oneself, and this self is the enemy of oneself. A very, very important and heavily quoted verse. गीता प्रेस में कहते हैं, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है. इसके ऊपर तो हमने कितनी बातें की हैं. मन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है. अमृत बिंदु उपनिषद यही बात कहता है. Exactly this. A huge chunk of Amrit Bindu Upanishad is this. So, मनुष्य, अब कृष्ण ने ये तो कह दिया कि भाई ना तो इंद्रिय से जुड़ो ना कर्मों से जुड़ो. ये होगा कैसे? How will that happen? Now he's telling you the way. The way is, you have to be so conscious that you do not allow your mind to pull you down. बहुत मजेदार बात है कि मनुष्य होना एक अवसर होता है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, बहुत ही शुभ मौका है. किस बात का मौका है? मौका है कि आप मनुष्यत्व को पार कर जाएं और देवत्व में मूव इन कर जाएं. आप अपने मन, इंद्रिय, इन सभी जो फोर्सेस हैं, इनके आगे बढ़ जाएं और you go beyond, which is where is yogarudha या पूर्णता या शून्यता and all that. लेकिन उतने ही दुख की बात है कि इस अपॉर्चुनिटी को 99% 9 लोग मिस कर देते हैं. 99.9% people end up losing and missing this opportunity because they have never paid attention to the self. They have not known anything beyond. It is, in fact, a lot of people, even when they come across, they close their eyes. इस संभावना के प्रति इतनी उदासीनता होती है जैसे कि ये संभव ही नहीं है. It doesn't exist. हुए और माया तो इतना मजा दे रही है, इतने प्लेजर्स दे रही है, मौज मार रहे हैं उसमें. तो उस मौज को त्यागे कौन? अरे यार, इतना अच्छा खाना सामने रखा है और तुम मेरी थाली खसकाए जा रहे हो, कहते हो ये उबला हुआ खाना खाओ. आई हैव सीन ह्यूज भोजन को लेके नाटक.
and for everything then. आज मैं ये कपड़ा पहनूं कि वो कपड़ा पहनूं कि क्या पहनूं, and how am I looking, and this color is not looking good and that color is not looking good. So much of choices. We're filled with choices, and all choices is of the sense organs. हम अपने चॉइस को लेके थोड़े ढीले भी नहीं होते हैं. It's okay, let this be. मुझे ये नहीं पसंद है ना, तो मुझे भी यही करना है. Why? Because I have to break that in me, that which is saying that no, I will not do this. थोड़ी परेशानी होगी, पर कौन उठाए, क्यों उठाए? तो एक बहुत सुनहरा अवसर होता है जो हाथ से जाता है. I was listening to Sadhguru when he said something very interesting. He said, for most of the people, the life is like this. When you go to, imagine you go to a theater to watch a movie. And in between, the movie has just started and you slept. And when you wake up, the movie has just ended. And everybody else is clapping and talking about it. And you are wondering, ye kya ho gaya yaar? I missed the movie, I missed the movie, I missed the bus. So for most of the people, life is like this. When they come in, they sleep into deep unconsciousness. They don't take notice of all that is important. And when there is time of their death, the death of the body, which is supporting this consciousness through which this mind and consciousness is functional. When the time is of that the body is to go now, that support system is to go now, all of a sudden they are bewildered. Shit, what did I do? I missed the bus. I missed the opportunity. For most of the people, this is how life is. So I think it's a huge gratitude that a few of us at least could become little conscious. At least उस तरफ देख तो पा रहे हैं कि एक संभावना है. That itself is a big grace. नहीं तो जो स्थिति होती है, जो वातावरण होता है, जिस कीचड़ में हम आते हैं, कीचड़ का बन जाना ज्यादा आसान होता है. कमल बन करके उठना बड़ा कठिन होता है. So now Krishna is saying that a man should uplift himself by his own self. तो वो अपने मन के ही द्वारा, अब ये भी संभव कैसे है, ये भी बहुत समझने वाली बात है. मन के द्वारा मन को कैसे उठाएंगे? To understand this, it is important to recognize कि हमारे मन के कई हिस्से होते हैं, कई. इसीलिए this word individual is so important. It comes from the root indivisible. पर हम फिलहाल जो हैं, हम पूरे तरीके से divided हैं, fragmented हैं. काहे में fragmented हैं? So there is a part of mind which is driven by parents, a part of mind driven by friends, a part of mind driven by hobbies, part of mind by profession, part of mind by society, a part of mind by some other goals. And if you go ahead, you will find 1,000 fragments. और इन्हीं फ्रैगमेंट्स में से एक कोना वो भी होता है जिसमें देख पाने की क्षमता होती है, जिसके कारण दृष्टा भाव संभव है. मुंडकोपनिषद कहता है, एक डाल पर 2 चिड़ियां बैठी हैं. एक नाच रही है, गा रही है, दाना खा रही है. Chirping, flying,
ईटिंग, और दूसरी शांत भाव से देख रही है। वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स। बेसिकली वो दो अलग अलग चिड़िया नहीं है, वो मन के दो अलग अलग भाव हैं। एक दृष्टा भाव है और एक शेष सारा भाव है। तो इस मन में ही शक्ति भी है कि वो देख सके कि ये बाकी जो हिस्से हैं मन के, वो कर क्या रहे हैं, वो चाहते क्या हैं, वो जा किस दिशा रहे हैं। और जैसे कि एक उपद्रव से भरा कक्ष है, क्लास है, students very very indisciplined, and all of a sudden the teacher enters. So what happens? There is a pin drop silence. Oh, teacher has come, teacher has come. In exactly the same way, the moment this witness mind throws a look even at the rest of it, they all get silent. That powerful it is. This exactly is what Jnana Yoga says. ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जानते ही पता चला कि मैं वही हूं। The moment this drashta bhav became aware, you know that you are awareness. But this witness self is not at all working. It's sleeping or it has been pushed to the back. कमरे के कोने में जाओ और सो जाओ। और तभी पतंजलि कहते हैं कि अच्छा तुमको तो वो दृष्टा भाव से काम नहीं चलता, यू आर अ डूअर, यू नीड टू डू समथिंग, सो आई विल गिव यू द होल अष्टांग योग and you follow each of this, and when you follow this, what will happen is dharana dhyana samadhi, that will happen. So the witness self will, and we have, and even this Drigdrishya Vivek, Shankaracharya says very Drigdrishya Vivek aprokshanubhuti, very beautifully it says, it is the mind which is when surrendered, it is the Atman. तो मन ही, ये ही वो सेल्फ ही है। जब वो अपलिफ्ट होता है और वो पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है और वो श्रद्धा में रहता है और वो सेंसेस से ड्रिवन नहीं होता है और वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से ड्रिवन नहीं होता है और लक्ष्यों से ड्रिवन नहीं होता है और मोटिवेशन से ड्रिवन नहीं होता है, तब वो ही मन आत्मन होता है। वो ही मन आत्मन है और कुछ नहीं है आत्मा। So when all of this nonsense subsides, the right sense is revealed. जब दर्पण के ऊपर से लगी सारी धूल को मिटा देंगे, so the mirror starts to shine once again. And that is why it is possible that we ourselves can uplift ourselves. This is why Buddha could say with so much of faith and surety to Anand, अपदीप भव, अपने दीप स्वयं बनो, क्योंकि उसकी संभावना है। And not to say this to a beginner is going to be challenge, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है दीप का, वो क्या बनेगा दीप। But there is a great possibility. And then Krishna says, not just that you uplift, let him not weaken the self. न आत्मनम अवसादयेत, इस आत्मन को अवसाद मत दो। Why? Because if you will weaken it, the witness one can't work. The rest will take the lead. The rest will become the driving force. And so the possibility will diminish. संभावना है, परंतु होता कहाँ है? इसीलिए लोग बात भी नहीं करते हैं। अरे यार,
2 करोड़ कमाना आसान है, ये कौन करे, इसका तो कुछ पता ही नहीं है. So to make 10 crore goal is still easier, जो कि हमको शायद बहुत कठिन लग सकता है. But that goal is still feasible, and it is feasible to us in this form, in this body form, and in this life. But that goal, divine. How do I even think of it? क्योंकि उसका तो कुछ पता ही नहीं है. So let me not even think of it. And so what we end up doing is weaken this self which has the possibility to uplift the real self. तो उस मन को हम और कमजोर कर देते हैं, क्योंकि वो दर्पण जिसके ऊपर अभी धूल चढ़ी है और हमको उसको साफ करना है, हम उसके ऊपर और धूल लगा रहे हैं. We are creating more and more layers of dust over it. तो जो शायद कुछ अवधि में साफ हो जाता, अब उसको तिगुनी चौगुनी अवधि लगेगी, क्योंकि नीचे के लेयर्स और भी स्ट्रेंथन हो गए हैं और ऊपर और धूल के लेयर चढ़ा दिए हैं और संस्कार चढ़ा दिए हैं. अभी पुराने संस्कार तो धुले नहीं, अभी नए और इतने सारे उठा लाए. And this is how we are weakening ourselves. हर क्षण जब हम इंद्रियगत बातों में संलग्न होते हैं ना, हमको ये याद करना पड़ेगा. हर उस क्षण में ये अलार्म क्लॉक बन जाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं. We are weakening this self which has the potential to actually get uplifted. And so be very conscious, very mindful whenever you are doing anything which has relationship with the senses. बाकी तो जो गुण है वो आपसे कार्य करवाएंगे ही, उनको आप रोक भी नहीं पाएंगे. But where do you need to draw the gap? You must know. For this self is the friend of oneself, and this self is the enemy of oneself. यही एक क्षण में मित्र बन सकता है और ठीक दूसरे ही क्षण में शत्रु. और किसी मित्र और शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है. आप कान के कच्चे हैं, आप तुरंत बहकावे में आ जाते हैं, आपको तृष्णा तुरंत लुभा जाती है, शत्रु खड़ा है. आपसे कहा जाता है कि यार चलो आज मूवी देखने चलते हैं, आज बाहर खाना खाने चलते हैं. There's so many times wherein we are not able to even manage to come to this platform. Why? So many other things have taken up the priority. So then we don't need any other friend and any other enemy. And this also is a guiding definition for what does it mean to be a friend and what does it mean to be an enemy. आप भी यदि किसी के मित्र बनना चाहते हैं, तो मित्रता का अर्थ है कि आप उसको उसके स्वधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हैं. This only is friendship. And so this only is. इसीलिए कृष्ण और अर्जुन सही मायने में मित्र थे. Nobody else. To be a friend, this is the only thing that one has to do. Nothing else. For everything else, कहते हैं ना कि यार कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, उनके साथ क्या मजे किए, कितनी मस्ती. Company of friends or company of enemies? Everybody who has pulled you into sensory stuff, sense gratification, and to all of those to whom you have pulled into sensory gratification,
Could anyone say, see you standing, that कुछ तो बात है, there is something. क्योंकि आप कई बार उसको ना बोल पाते हो जिसको कि दुनिया पूज रही है, जिसके लिए दुनिया छटपटा रही है, जिसके लिए संसार पागल हो रहा है, और आप उसको ना बोल देते हो. Can you be that personality? And that's where the definition of friends and foe stands. और जो अपना ही मित्र नहीं हो सकता, वो दूसरे का मित्र कदाचित कभी नहीं हो सकता. और जो स्वयं का दुश्मन है, वो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया का दुश्मन ही रहेगा. उससे ज्यादा वो कुछ नहीं हो सकता. हमें भी मजा आता है इंद्रियगत विषयों में, और हम दुनिया को भी कहते हैं यार चलो, तो चलो. लोग इतना, ये यहाँ तक इन लोगों का ध्यान रहता है कि यार तुमने डीपी चेंज कर दी, बड़ी जल्दी जल्दी चेंज करते हो, यार तुमने वर्षों से डीपी चेंज करी नहीं. Such small stuff, and look what all do we take notice of. लोगों के स्टेटस देखा कीजिए, देखिए कहाँ जा रही है जिंदगी, तुरंत समझ में आ जाता है. इंस्टाग्राम में गए तो स्क्रोलिंग खत्म ही नहीं हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है. जहां एक मौका मिलता है, मौन में उतरने के अलावा हम सब कार्य में उतर जाते हैं. एक क्षण मिलता है, यूट्यूब खुल जाता है, मोबाइल खुल जाता है, इंस्टाग्राम खुल जाता है, फेसबुक खुल जाता है, सब खुल जाता है. किंतु वो सब दरकिनार नहीं होता है, वो किनारे नहीं रखाता है कि थोड़ी देर तो आंख बंद करके मौन में बैठे, थोड़ा देखे कि यहाँ क्या खटपट चल रही है. तो कैसे बनेंगे अपने मित्र? क्योंकि यहाँ तो मित्रता की पूरी परिभाषा ही कुछ और है. द होल डेफिनेशन इज समथिंग एल्स. So you yourself can be your friend and enemy. Choose. And we are actually choosing every moment. ये ऐसा नहीं है कि आप अभी आपने चयन कर लिया कि यार मैं तो अपना मित्र हूं और आप मित्र हो गए. क्षण प्रति क्षण ये चयन करते रहना पड़ता है. Every moment you have to keep choosing, and there is no choice about it. There is no other way about it. Please remember this. This choice has to be made every moment. Yeah. अभी तक तो कृष्ण बहुत ध्यान के विषय में कह भी नहीं रहे हैं. तो कह रहे ध्यान से पहले जो मन चाहिए, जो ध्यान में उतर पाए. अन्यथा यदि मन ही वैसा ना हो तो वो ध्यान में उतर ही नहीं सकता. इसीलिए अष्टांग योग की पहले 5 पड़ाव, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, एंड दीज आर ऑल एक्सटर्नल. यम नियम एक्सटर्नल, आसन फिजिकल लेवल, pranayam physically, pratyahara drawing of senses, again we are talking of external stuff. इसके बाद आती है धारणा ध्यान समाधि विचार, the internal work. Yeah. Okay.
In the next one, Krishna tells, in whose case this self can be the friend of the self, and in whose case this would be an enemy. Shall we proceed? Or anything arising? मैम, एक एनालॉजी है। जब हम ये कहते हैं कि हम अपने ही बेस्ट फ्रेंड हैं, अपने ही सबसे अच्छे मित्र हैं, इसका मतलब है हमें, मतलब थोड़ा मैनेजमेंट के लेसन से भी मैं इसमें अपने टीम को बताता रहता हूँ कि वी शुड बी एक्सट्रीमली सेल्फिश फॉर योर ओन गुड, राइट? सो आप सब, what it means by your best friend, that if you do your work awesomely well, you will have more time, you will have more love to share with your family, you will have more time. So आप अगर कुछ भी सेल्फिशनेस के बाहर करते हो, अगर आप केवल सेल्फिश बन जाओ तो ऑटोमेटिकली आपने अपना काम खत्म किया, अच्छा किया, दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ा, आपके पास ज्यादा समय मिला, आपने और क्योंकि आप सेल्फिश थे, आपने अपना काम, मतलब एटलीस्ट योर टास्क इज बीइंग राइट, सो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को, समाज को, देश तक को भी फायदा मिला। चाहे आप उसको सेल्फिश होने को देशभक्ति कह लो, सेल्फिश होने को प्रोफेशनल कह लो, मतलब ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक है, बट जहां मैं मित्रता देखता हूँ, खुद से मित्रता, वहां पे मैं कहता हूँ पॉजिटिव वे, मतलब सकारात्मक मित्रता की तरफ बढ़ जाओ अपने आप से, दैट इज सेल्फिशनेस। पता नहीं कितना सही है तो मगर मैंने थोड़ा सा अभी मैनेजमेंट में ज्ञान ऐसे ही देने के बोल लिए रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मतलब एटलीस्ट मैनेजमेंट के ज्ञान सही है, बट लेकिन इसको व्यापक दृष्टि से देखेंगे अभिषेक, तो आप पाएंगे कि पहली बात, जब ये व्यक्ति सेल्फिश होता है ना, तो अपने कार्य में करने में इतना समय लगा देता है कि उसके पास और कुछ समय बचेगा नहीं. सो यू विल हैव मोर टाइम दैट गोज फॉर अ टॉस, बिकॉज you are so engrossed in doing what you're doing correctly, nicely, whatever, doing so much of research, all that demands time. अगर वो पता ही होता है कि यार फट से हो जाएगा तो लोग कर ही लेते, फट से होता नहीं है, देन जितना टाइम मैं उसमें लगा रही हूँ, यार मैं सेंचुरी प्लेजर में लगाती हूँ तो मुझे कितना इंस्टेंटली मजा आता है. I have so much of fun time, I laugh, and who doesn't love laughing? I laugh, I have fun and all that. I eat good food, I go to movie and all that. बाद में तो कैसे ना कैसे, जब जैसे ना तैसे वो दे ही देते हैं. और जीवन का तो ये हिसाब किताब ही बड़ा मजेदार है, that how you do in academics doesn't really define how will you do in your profession. उसका कोई तालमेल ही मैम एक्चुअली वो पूरा मीनिंग नहीं था, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ये हो गया कि गीता पढ़ना, गीता समझना भी सेल्फिशनेस है। हर बिल्कुल है. देखिए, मगर मैं सेल्फ वही के बता रहा अलावा हूँ तो ना। कुछ है ही नहीं ना, सेल्फ के हाँ अलावा कुछ है ही कहाँ. तो हाँ, सो सेल्फ, वही मैं, मतलब मेरे कहने का मतलब यही था कि जब मैं लोगों को, मतलब अपनी टीम या उसको समझा रहा हूँ, तो योर ओन कामनेस, योर ओन पीस, राइट, डजंट इवन, मतलब अगर आप सेल्फ, आपको अपने को देखना है, आपको अपने को खोजना है, वो सेल्फिशनेस है। मैं वही कह रहा हूँ, पॉजिटिवनेस की सेल्फिशनेस, वो सेल्फिशनेस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये देखिए, स्व का अर्थ है ना स्वार्थ, तो जो स्व को जानने में लग गया तो वो कैसे बुरा हो सकता है या अनुचित हो सकता है? ये तो असंभव है. लेकिन यदि व्यक्ति स्व को जानने में लग जाए ना, तो समाज का जो ये ढांचा है ना, वो गिर जाएगा. और इसीलिए स्व को जानने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया जाता है. समाज चलता ही कैसे है? समाज चलता है कि भाई तुमको, आई विल स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, हम दोनों मिली जुली सरकार चलाएंगे. समाज ऐसे चलता है. आप ये थोड़ी कहते हो दैट I go up 2 level and I also bring you up to my level, and then I again go up 2 level, I bring you up again to my level. How many of people have you seen doing this? जो
स्टूडेंट से जाके पूछ लीजिए 9th-10th में, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, they don't even share their notes with others. Why? Because if I share, I'm creating my own competition. That is the thought process. हमें ये कहा जाता है, you do it fast, because if you don't do it, somebody else is coming and doing it and you will lose. That's what we are told. तो यदि हम स्व को के अर्थों में लग जाए ना, तो पूरा ढांचा ही खत्म हो जाता है. अब जो स्वार्थ होता है उसको बुरा ही इसलिए माना जाता है क्योंकि हम स्व में जब लग रहे हैं तो हम असली स्व में तो लग ही नहीं रहे हैं ना, हम लग रहे हैं उस स्व में जो मानसिक है. तो उस स्व में जब हम लगते हैं तो हम और क्या क्या पैदा करते हैं अपने चारों ओर. तब हम अपने चारों ओर बहुत सारी कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को पैदा करते हैं, ईर्ष्या को पैदा करते हैं, द्वेष को पैदा करते हैं. When you do well, people praise you, others feel jealous, others feel competitive, others feel यार ये तो इससे कौन बात करेगा, तो बड़ी टेढ़ी मुंह वाली है. She will never share her notes, because she has to get all the praises. These are the premise on which the society thrives. If everybody becomes very central to know who they are, that very moment, the whole world will transform. Automatically, communism aa jayega. Why? Because everybody will only take what is needed. Nobody will hoard extra. And so nobody will be there to snatch, because there is actually enough on this planet. But because there is so much of hoarding that a few people don't get, and those who don't get, then they go and snatch. And because a few people have hoarded, so the others feel jealous. They feel we also want this, because when we have so much, these are the things possible, all externally driven. So the whole tendency of accumulation goes. Automatically the society becomes communist, not by the principle of communism, but by the very nature of it. That's where Vasudhaiva Kutumbakam becomes a possibility. That this entire world is my family. I relate with everybody as my family. And ma'am, there is selfishness prevails, right? Because you are not thinking about anybody else. You are only thinking about you, and then Vasudhaiva Kutumbakam automatically happens. No. You are thinking about which you. If you are thinking about the ego you, Vasudhaiva Kutumbakam can never happen. Because the ego needs protection. Ego always feels threatened. That's the basic characteristic. Ego needs security. And when you give protection, when you give security, you are creating division. Do you dare to break the wall between you and your neighbors? We will stay together. Do you care for the neighbor's child exactly in the way you care for your child? No. We protect our child. But that is called affinity, right? But if we that is where Advait helps, right? If somebody else in a problem, you are in a problem. Even that thing is happening in Somalia. Then there is where Advait is going to help us a lot. Absolutely. But when you say your own child, your own country, that is within that there is an affinity. It's not that you are different from. It's not an affinity. Would you want, how many of us are able to say that if there is only one vacancy for X amount of money, let the best man get it? No, we say mere bacche ko mil jaye. My child secured this position. And if at all you have to give that position away for somebody else's who seems to be more needy, are we able to?
when it comes to this practical life. And all this happens only because the need of protection, security is so high. Every moment the identity is under a threat. And so we need to protect it. And to protect it, we create all the standards of living. I have this much. So indirectly, I'm protecting my identity. See, I am that. What is my drawing room showcasing? It is showcasing my capability and hence my identity. How many people do you meet who earn in crores and they have very simple living? Who can still live in 2 and 3 BHK? नहीं, उनको तो 5 BHK से नीचे कुछ चलता ही नहीं है. And they need a society which has that and that and that. And they got to be member of this and this prestigious clubs. Why do you need to create such clubs? All of this division and fragmentation is simply because of this one challenge. There is this ego, and we are identified with ego. We are not able to go beyond that ego. And so we, day in and day out, keep protecting it. I'll tell you, Abhishek ji, in I think almost 2 years ago, we were in the session and we were doing some Upanishad. And I know it is so challenging for me to be kind of rude to people in the session because they disappear. It is so challenging to take any kind of, somebody is questioning me. And there was this fellow who said that, but Richa, isn't it so wonderful if life is giving us all this to enjoy? We should enjoy, isn't it? What's wrong in enjoying? And then I very nicely said, if somebody is happy in enjoying, then spirituality is yet not for them. It's not their calling. Spirituality is not for everybody. It's only for somebody who can see that those enjoyments are so bogus. And they can feel that sadness in that enjoyment. They can see what they are covering through that enjoyment. And so that enjoyment disappears when you try and enjoy those things. Because that sadness, it starts to reveal itself. So if that is still calling you, maybe spirituality is not for you. And I was very polite in saying, and then next session onwards, he dropped. Never came. Because it demands huge surrender to withstand what is being told to me. I was talking to Arjun ji yesterday, and for something, and he was like, "आप ही तो guru and आप ही तो guru." I was laughing. I said, "मैं कोई guru नहीं हूँ. वो कुछ हो जाता है, वो अलग विषय है." And for something he said, I said, "नहीं, see, I have never wanted to put me in that position. And for that matter, इसलिए if I say something rude to anybody, people will not be able to take it. Because who am I to say anything to them rudely?" That demands a lot of, I was talking about how we were talking about Acharya ji, and I was telling him how in the session, there were times when left, right, center, I have received. For an hour, he had been bashing me. Hour. And I'd been simply listening to him and keep my ego under check. And there would be this, deep, what do you say? Revolt that I'll not go to the next session. And then I would smile at myself. I said, I know what's happening. I know the game. One has to find a place wherein one is willing to surrender. It's okay. He may not know my entire situation, but he is seeing something which I'm not seeing, and he's opening me to that. So let me see and let me be mindful of that. Lot of times I've said a sentence and I've heard for it for the entire session. Because we were a very small group. There were times wherein I remember we were just 4 people to be
to go through the discussions. That was way back 2011-12. But you got to go through the process. You got to go through the process. And you got to take it that existence has brought this experience to you, right? So we are not able to take things. We are not. And that's why our evolution also stops on the spiritual path. So swa has got two connotations. One is protection of identity, which is the selfishness that the society talks about, which is actually condoned all the time, despised all the time. But that is what everybody is, because they have to protect their identity, because that is all that they know, their identities. And then there is this real swa, the real self, which is beautiful. When you serve that, and hence you are selfish for that, then it flowers. Then Vasudhaiva Kutumbakam happens. So one has to be very mindful which swa is being served, which self is being served. Yeah. And this is a very subtle difference that comes to us, very subtly. But you will love it when you start catching yourself, because it is so unburdening. It is as if you can really be. You don't have to mask yourself in any way. And you can be easygoing in whatever way you are. So unburdening it is. And then you start to taste the real joy. The real joy. So yes, given your position, I can understand you have that's how you have to maybe portray. And it will also be lovely if you can bring them that when they do this, what happens next? Given our positions, we have to at times play very manipulatively, very, very much. Somewhere it's worth recognizing that we all have this shackle. We all have. And that's why karma yoga is very important. For people like us, karma yoga makes a lot of difference. And you will yourself see that once you allow those things to get into your heart and you start to think like that, the right opportunities also start coming your way, wherein you're able to really allow karma yoga to function. But the moment we have a desire that we want this crore house and this big a house and this kind of vehicle, then we have created a fragment. That's where all the conflict happens. That's where all the conflict happens. So good. Thank you for bringing up that question. That helps all of us in the discussion. Now let's take a pause here. Anything coming up? 6. Again, it will take some time. It's already 9:45. So yeah, it is in the same lines. Abhi uska aage sara same lines par hi hai, Pradeep ji. 7th is also like that. 9th bhi वैसा ही है, 8th भी वैसा ही है. So
Let's take a pause. Yeah. Anything emerging? At times I wonder, how interesting it would be that in a corporate job as a leader, in a leadership role, you become little easy with your colleagues and you nurture them. The only thing is that nurturing is a long way route, and result is expected the very next day, rather as of yesterday. So, but if one could also allow the nurturing self to function, one can create an amazing environment even at work. एक तो हमारी पूरी अपब्रिंगिंग जो इस पूरे सामाजिक परिवेश के साथ एकदम ऑ में है. हे भगवान, डार्विन को बुलाओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. फिट नहीं हो तो गायब हो जाओगे. एक वो है स्थिति, और दूसरी तरफ कृष्ण आ जाते हैं. बेचारे डार्विन को कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है कृष्ण के साथ. Long time back, this WhatsApp messages was very common. There was this message talks of a race between children. So there was a starting point and then there was this finishing point. And the race begins, and halfway, one girl, she stops and she falls down. And she was actually leading the race. So everybody thought, oh my God, now this other person will lead, And what happens is, the rest of the kids, they come to rescue her. And they rescue her, they help her, and they all cross the finish line together. And the whole stadium is in awe and applaud and tears. And this race was of the autistic kids. If to support each other needs autism, it's better to be autistic, isn't it? If to live in harmony. Those so-called not normal children were more normal than we so-called normal. The so-called normal can't think of crossing the line together. And this happens also a lot because we don't recognize that we are product of our tendencies, our gunas. गुण अपना कार्य करवाएंगे और वृत्तियों के वशीभूत होकर के हम सेंसरी प्लेजर्स, ग्रेटिफिकेशन डिमांड करते हैं. So no child is a born slate, plain slate. Every child is born with a lot of writings on the slate. And they are more inclined to do those work. And that's why I really dream of some kind of Gurukul wherein all the children could go, wherein they really could get an environment wherein they are more motivated towards doing the right thing. And वो सामाजिक इंद्रियगत चीजें हैं ही नहीं तो खींचेगा क्या? It's like when my daughter started to eat too much of sweets, and I recognized that, I stopped bringing sweets at home. ना लाएंगे ना तुम खाओगी, क्योंकि तुम्हारा अपने ऊपर तो कोई वश है नहीं. तो then I have to cut off the supply. That's the way. तो जब तक कोई बच्चा है उसके लिए तो कटिंग ऑफ द सप्लाई बड़ा जरूरी है. और हमारे लिए
हम स्वयं अपने सप्लाईज कट करें. So we hold ourselves from going for indulging in shopping and movies and entertainment and all that, and social media. So we got to cut our own supplies. This is where the mind becomes the friend. The self becomes a friend when you cut your own supplies. Then those supplies lose the attraction power when you cut it consciously. But if you don't cut that supply, what is happening is those senses are getting the prana shakti, and so they are becoming stronger and stronger and stronger. And so their demand of even more indulgence is going to be higher and higher and higher. That's why. So cut your supplies, be your friend. Okay. Anything? Or shall we stop? Chaliye, let's sit straight. Close your eyes, take a deep breath. You can chant along with, or you can just be. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.